क्या हो सकती है उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मुझे लगता है कि एक शिक्षक के नाते कुछ ऐसी चीजों पर रिसर्च होना बहुत जरूरी है जो हमारे विद्यार्थियों के लिए बड़ा आने वाले समय में उपयुक्त रहे। तो सब्जेक्ट उनका ऐसा ही कुछ सब्जेक्ट उनका था जो कि आने वाले हमारे स्टूडेंट्स के लिए और सभी रिसर्च के लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा, कि पंचम स्वर इन मध्यम प्रोमिनेंट रागास। तो ये उनका टॉपिक था, और बहुत ही अच्छे तरीके से इस माध्यम से उन्होंने क्लासिफिकेशन भी कैसा हो सकता है नए तरीके से, तो इसके बारे में उन्होंने प्रकाश रखा। तो मैं मुझे अच्छा लगा कि नया कुछ तरीके से उन्होंने अपना एक प्रेजेंटेशन रखा। उसके बाद में अ, हेमांगी जी, जो हमारी विजिटिंग फैकल्टी भी है, उन्होंने भी संगीत और सौंदर्य शास्त्र के बारे में अपने विचार रखे। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। और खासकर सिक्किम यूनिवर्सिटी से समीधा वेदवाला जी, इन्होंने अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया कि प्रिंसिपल गायकी इन सितार। बहुत अच्छे तरीके से उनका ये प्रेजेंटेशन रहा। गायकी और सितार के बारे में मैंने पहले ही अपना रिपोर्ट अपने एक ग्रुप में दिया है। तो गायकी का और सितार का क्या संबंध है, ये बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने देखा है। हमने भी शाहिद भाई परवेज, राशिद खान साहब की जुगलबंदियां काफी देखी है कि किस तरीके से एक अलग अंदाज में सितार के बाद से भी गायकी बढ़ती है। तो गायकी जो बढ़ती है, जो उपज आती है, वो वाद्यों से भी आती है, तबले से भी आती है, सितार से भी आती है। हम देखते हैं कई गायकियों में सरगम का उपयोग जो होता है, सितार का जो बाज चलता है, जिस तरीके से सितार की धुन चलती है, बाज चलता है, उनके जो कुछ एक व्हाट वी विल से फ्रेजेस होती है सितार की, वो सितार की काफी उस बाज को उस्तादों ने, पंडित लोगों ने उस अंदाज को गायकी में भी लाने की कोशिश की। उस वजह से काफी घरानों की गायकी में कुछ बदल भी हुआ है। जैसे हमारे रामपुर सैसवान घराने में हम देखते हैं कि सरगम का जो उपयोग होता है वो सितार का बाज से ही हुआ है, और तबले से तो गाने की उपज बढ़ती है। तो बहुत अच्छे तरीके से समीधा मैम ने जी भी ये विषय को आगे रखा। अंकित भट्ट जी जो वनस्थली यूनिवर्सिटी से थे, उसके बाद में राजेंद्र भोसले जी जिजामाता महाविद्यालय कोल्हापुर से, उन्होंने अपना रिसर्च प्रेजेंटेशन दिया। और हमारी डिपार्टमेंट के बहुत ही होनहार स्वप्निल चाफेकर जी, जो हमारे यहाँ के जेआरएफ स्टूडेंट भी थे, अभी चिन्मय यूनिवर्सिटी पुणे से वो एज अ फैकल्टी करके है वहां पर। बहुत अच्छा उनका प्रेजेंटेशन रहा। और आखिरी में सिद्धि भटनागर जी जो बनस्थली से थी, उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत के बारे में अपने विचार रखे। बहुत ही अच्छा ये सब प्रेजेंटेशन रहा। और जो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, वो सभी इंस्ट्रक्शंस का पालन सभी पार्टिसिपेंट्स द्वारा हुआ। और दिए गए वक्त में बहुत अच्छी तरीके से सभी का प्रेजेंटेशन रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। मैं यहाँ एक बात रखना चाहूंगा, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का सेकेंड टाइम यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसके पहले भी हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लिया था, जब हमारे साथ में विश्वविख्यात पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े थे, शिवताई सडोलीकर जी थे। और इस वक्त भी बड़े बड़ी खुशी हो रही है कि रूनू मुजुमदार जी जैसे एक विश्वविख्यात कलाकार ने इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का की नोट प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद में काल योगी सुरेश तलवलकर जी, ऐसे महान कलाकार हमारे साथ जुड़े। और सभी का नाम लेना यहाँ पॉसिबल नहीं, लेकिन इन सब ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये जरूरी नहीं है कि कोई बाहर का ही व्यक्ति आके प्रेजेंटेशन दे या हमारे साथ में जुड़े। ये जो लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के, यही खुद इंटरनेशनल लेवल के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है। इनको इंटरनेशनल लेवल से बाहर देखा जाता है। इनकी कला जो है वो
हिंदुस्तान के सरहदों को पार होके काफी देशों में इनके चाहते, इनके इन पर प्रेम करने वाले, इनके संगीत पर प्रेम करने वाले ऐसे लोग हैं, तो हमारे साथ एक इंटरनेशनली एक्लेम जो आर्टिस्ट है वो हमारे साथ इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जुड़े। तो नेचुरली ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कामयाब कॉन्फ्रेंस में इसे बोलना चाहूंगा। और आज के इस मेरे ए ग्रुप के प्रेजेंटेशन से हम सभी जो है सभी रिसर्च स्कॉलर्स से, फैकल्टीज से ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और स्वप्निल चाफेकर जी, प्रशांत राजवर्धन जी जो मेरे साथ जुड़े और इसका एंकरिंग किया उन्होंने पूरे सेशन का, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ उपस्थित हमसे जुड़े सभी लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। Manisha ji, can I start? Yeah, please. Sorry. I request Abdullah ji to now present the report of Group D. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर मनीषा जी, डॉक्टर कुणाल इंगड़े सर जी। मेरे ख्याल से हर एक जो रूम हमने क्रिएट की थी वहाँ पर काफ़ी सारे शोधार्थियों ने, काफ़ी सारे शिक्षकों ने भी अपनी अपनी बात रखी है और काफ़ी सारे यहाँ पे पर्सपेक्टिव्स पाए गए हैं। हम थोड़ा समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शॉर्ट में सम अप करना चाहूँगी और सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी अपनी बात थोड़ी शॉर्ट में रखें, क्योंकि डॉक्टर श्रीमती मीता नाग जी यहाँ पे उपस्थित है और उनका सेशन भी हमें सुनना है। हमारी जो रूम थी ग्रुप डी, मैं और हमारे विद्यार्थी प्रफुल्ल शर्मा जी हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे और काफ़ी सारा बहुत अच्छा यहाँ पे हमें सुनने का मौका मिला, जैसे कि संगीत और चित्रकला में कैसे सुसंवाद पाया जाता है। फिर बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट आया था सिख परंपरा कीर्तन में संवादात्मक भाव, परमजीत कौर जी ने यहाँ पे पेश किया। श्रीमती कल्पना जैन ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और कर्नाटक से हमारे यहाँ एक शोधार्थी थे, शिक्षक थे उपस्थित, उन्होंने वाद्य संगीत की ट्यूनिंग और प्रस्तुति में हारमोनी और संवाद कैसे पाया जाता है उस पर काफी अच्छा विवेचन किया। फिर हमारी एक छात्रा है, एसएबीटी की छात्रा है, रिसर्च स्कॉलर, उन्होंने कॉन्सोनेंट्स इन कंपोजिशंस ऑफ वेरिड जॉनर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक था। फिर यहाँ पे रिकॉर्डिंग टेक्निक्स और संवाद तत्व, इसमें प्रफुल्ल शर्मा ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। एक नेशनल इंटीग्रेशन को लेके भी एक बहुत अच्छा टॉपिक मिला यहाँ पे, जो अमृतसर से 2 विद्यार्थियों ने पेश किया, भारत की राष्ट्रीय अखंडता में संगीत का अवदान। दूसरा एक अच्छा टॉपिक था जैन विधानों में संगीत संवाद, ये भी एक बहुत नॉवेल टॉपिक लगा। ऐसे हमारे यहाँ टोटल 12 शोधार्थियों ने और पार्टिसिपेंट्स ने अपनी अपनी बात रखी। एक भारतीय संगीत के विकास में संवाद तत्व जैसे स्वर, ग्राम, श्रुति, थाट, रागवादी, यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा पेपर यहाँ पे पढ़ा गया। फिर साहित्य और संगीत, लिटरेचर एंड म्यूजिक में एक अंतर्गत जो संवाद है उस पर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसे कि हार्मनी, वेस्टर्न म्यूजिक, वर्ल्ड म्यूजिक एंड फ्यूजन म्यूजिक, इस पर भी बहुत अच्छा एक पेपर यहाँ पे प्रेजेंट हुआ। मैं चाहती हूँ कि हर पार्टिसिपेंट को ये जो जब प्रोसीडिंग्स आएगी तो हम बहुत ही उत्सुकता रहेगी उसके बारे में कि कितनी सारी पर्सपेक्टिव यहाँ पे संवाद तत्वों को लेके इंडियन म्यूजिक एंड कॉन्सोनेंट्स, इसमें कितने सारे पर्सपेक्टिव हमें आज मिले हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ पर, और मैं डॉक्टर अनया जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी समरी यहाँ पे सादर करें। Thank you, Dr. Mridula. I chaired presentations of Group B. There were in all 17 participants in the group, out of which 10 participants presented their paper. And my student Shivaranjani assisted me in conducting this session. It was a very interesting session, I must say.
in which different aspects of consonants related to music and its presentations were discussed very thoroughly. Though they had some time constraint, but they definitely tried to do justice with their topic. And when we arrange such kind of seminars and workshops or webinars, its objective is the same, that you come together, you share your knowledge, and you brainstorm on a particular topic and discuss all the aspects of it and come to a particular specific conclusion so that everybody can get benefited out of it. So मुझे बहुत आनंद है कि ये जो उद्देश्य है ये सफल हुआ। इस प्रकार मैं ये ग्रुप के प्रेजेंटेशन देख के बोल सकती हूँ, क्योंकि इसमें केवल संगीत में कॉन्सोनेंट्स यही टॉपिक नहीं डिस्कस किया गया, तो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच जो यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत जरूरी समझा जाता है वो भी देखा गया, जिसमें धर्म से रिलेटेड कुछ पेपर थे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि सभी पेपर बहुत अच्छे थे, एक जनरल ओवरव्यू में दे रही हूँ। फिर सौंदर्य शास्त्र, मानस शास्त्र, इनमें संवाद कैसे होता है, वेस्टर्न म्यूजिक के साथ संवाद कैसे होता है, फ्यूजन में संवाद कैसे होता है, तो हर एक डिसिप्लिन के साथ उसके जो एक संवाद है उसकी बात की गई। और इस ग्रुप की रचना भी ऐसे की गई थी कि देयर वर सम टीचिंग फैकल्टीज एंड सम रिसर्च स्कॉलर्स, सो दैट रिसर्च स्कॉलर्स आल्सो they also got to learn something from the presenters, एक्सपीरियंस टीचर्स। एंड इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ओवरऑल ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा और सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। Mridula ji, should I present my group now? Yes, yes, please. मनीषा जी, आप अपना ग्रुप का समरी हमें सुननी है, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। So, Namaskar. I was the chairperson for Group C, and I was very happy because it was presentations for Sangeet in true sense, Geetam Vadam, Trayam Sangeetam Uchyate. So we had participants who were singers, dancers, and who also spoke about instrumental music. So in all, we had 14 presentations today. And amongst those, last 4 were from the professors and rest was from the research scholars. And I'm very happy to see that all the research scholars are pursuing their pursuit of knowledge very, very thoroughly. So I congratulate all the research scholars who have presented the papers today in the group C and others as well. As I mentioned, there was a paper by Nagaranjita ji, who is a research scholar from Banaras University. Within those 4 minutes, she also performed a dance form ROD. So that was quite wonderful, and she put her things very clearly. All in all the participants, those who were from various universities, Vishwa Bharati University, these are the research scholars, SNDT University, Surbhi Gupta, or they have all talked about various topics, Shruti Swara Samvad, Raganga and Samvad, consonants and Samvad, and very beautiful points like in India we call Samvad as a bhava. So its relationship with the emotive content was very finely brought out in the Shubhrajyoti Sen's paper. Apart from the students, there were also Meghna Kumarji, who happens to be our own student and now has joined Kashi University. It's heartening to see that they are now doing really well in their respective organizations. And then Sunita Shimali ji, who has presented a paper on Vadya Vrunda and the relationship of Vadya Vrunda and consonants, and what are the experiments that are being done in this field to make Indian music more enriched. So we can see that evolution or thinkers are still working on the enrichment of Indian music.
sorry, there was Dr. Hanuman Gupta ji, who presented various examples of Samvad Tattva in Raga, and then Dr. Vinod Thakur Desai ji also brought out very fine points on nature and music. So all in all, I thank all the research scholars and all the professors who participated in Group C presentations. And before concluding my remarks for the paper presentation, I would like to thank brilliant sitar player Shri Swikar Katti ji and bright JRF awardee Mr. Devesh Singh ji, who assisted me today in the Group C. And last but not the least, Mr. Abhishek of UCC department, who has been patiently looking after the technical aspects of these paper presentation group sessions in all the groups. So thank you so much. With that, now we have concluded the first session, and now we move to the second session, wherein the distinguished musicians' performance would enlighten the gathering. So now we have Srimati Meeta Nachi, an eminent sitar player who belongs to the great lineage of Indian classical music. She is a known figure in the performing arena, but now for new students, I would like to introduce her. Namaskar Meeta ji and welcome. Namaste. Thank you so much. I'm so glad to be with you all. Yeah, Vidushi Meeta Nachi is a daughter of veteran sitarist Pandit Manilal Nachi and granddaughter of Sangitacharya Pandit Gokul Nachi. She belongs to the illustrious lineage of Vishnupur Gharana of Bengal, a school of music nearly 300 years old. She was initiated into the world of sitar tradition of Vishnupur Gharana by her distinguished father, Pandit Manilal Nachi. This Gharana follows Dhrupad style in both vocal and instrumental recital. She is also a master's in English literature and MPhil. At the tender age of 4, her early training in sitar began with her mother, who was also a disciple of Pandit Gokul Nachi. Her grandfather's encouragement and instructions through singing had much influence on her early reception of music, most noticeably associating the instrument with her father performance at the age of 10. Observed as the International Year of Child. She won the Junior National Talent Award of Government of duet recital. Japan, she was awarded the Junior Friendship Award. Vishnupur Gharana. She is also a recipient of Junior Talent Search Scholarship from Government of India. As a soloist, she has been performing in numerous cities of the countries and has participated in famous Sangeet festivals such as the Dover Lane Music Conference, the Uttar Pradesh Sangeet Chakra Conference, Salt Lake Music Festival, Khayal Trust, Dadar Matunga, Darbar Festival London, Milak Fest England, so Government of West Bengal, Swarna Mahotsav Festival of Sangeet Natak Academy to commemorate the Golden Jubilee of India's independence in 1979 and many more. She has founded Gokul Nag Memorial
a trust for the promotion of Indian classical music in fond memory of her grandfather, Sangeetacharya Gokul Nachi. Apart from her father, she has performed in duets with many other eminent artists. I would like to mention here a few. In Sankat Motion Festival, accompanied by Pandit Kumar Boshi, uh, Pandit Anand Gopal Banerjee ji, Tarpada Chakrabarti Music Conference, Pandit Kumar Boshi on tabla, the Millennium Concert arranged by Rajya Sangeet Academy with Pandit Sapan Chaudhary ji, Saptak Music Festival with Pandit Kishan Maharaj ji, Bhawanipur Music Circle, Kolkata with Ustad Shabir Khan ji on tabla. During 1998 to 2004, she performed numerous duets in USA, UK, Europe, and Japan with Pandit Shubhen Chatterjee on tabla. We welcome you, Meetaji, to this seminar. We are indeed fortunate to have you today amongst us. Today, she would be deliberating on the topic consonants in tuning and aesthetic value addition in performance of non-percussion music. Now I request Meetaji to address the gathering. Thank you. Namaste, all of you. Am I audible, Kulkarni ji? Can you hear me? Yeah, we can hear you. You are audible. Okay. So I first of all convey my warmest regards to all the elderly guests present and also to all the members of the faculty, the Department of Music, Mumbai University, and to all faculty members of all the other universities present in this international seminar, and to all eminent guests, music lovers, and listeners on the web, and my heartiest greetings and love to all my dear students, scholars who have presented amazing, so beautiful papers in this seminar. Before beginning, I would just like to convey my pranams at the feet of my father, Pandit Monilal Nag, who is at present very, very ill. But am mentally taking his permission today to present my recital and my thoughts and views in today's seminar, and I ask for his blessings. I've been really privileged to play at so many wonderful concerts with very, very eminent and scholarly tabla players because of my Baba, with whom I have been a supporting musician in many of our duet presentations in the city, in the country, and overseas. Now, coming to today's subject, the ever vibrant consonants in Indian music and consonants in the tuning of the musical instruments. Let me first say that the best non percussion instrument in which we could demonstrate the tuning appropriately is the veena. Because the veena doesn't have the of strings, and here actually on a sitar, what happens? So this is the sitar. So here, depending on the rag that we are playing, we have to tune the taraf strings accordingly, according to the notes played, the raga played. But in a veena, the privilege is that when you don't have the taraf strings, so you can distinctly touch all the microtones, the shruti, without any other shruti coming in between.
Now, for today's demonstration, I have chosen to tune all my tarab strings in the Bilawal scale. Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni, Sa, all Shuddha Swaras, and I may have to demonstrate the Komal Swaras where the Shuddha Tarab strings may not resonate. And that is why I have kept the Kanpura, the drone also here, because the drone is going to compensate all those swaras that will not be heard resonating when I play certain ragas. To begin with, let us all think of ourselves that we are sitting in this planet under the sun. For me, the Swara Sa is the sun. The sun we know has 7 colors, the Vidyur. So, like the 7 colors of the sun, we have the 7 winds. But these are actually the distinct colors in between. When we paint, when we draw pictures, we bring in so many different shades of color, not the pure colors only. Likewise, in music, all the tones, the overtones, the microtones, they all blend and they all resolve into that sa, the sharaj. So the sa gives us that final piece, that final sthiti where all the swaras resolve themselves. They dissolve into the sa. And that is why sa is the achal swar along with pa, because pa we know is a consonant note with sa. So sa and pa, these are the basic 2 notes when we play some ragas which are mostly based on the Sharajgram raga, and the ragas which have sa and pa as the consonant notes. There the tanpura is tuned in fa, sa, 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 sa. As a sitarist, I'm using the 5-string tanpura. So fa, sa, 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 sa. Again that Kharaj string. Ah. And when we play a madhyam based rag, where the consonant notes are sa and ma, maybe a rag like Malposh, a rag like Bhagyashri, how we tune the drone is ma, sa, sa. Now, unlike the Western consonants and dissonance system, which is basically a linear progression, our consonants and dissonance system primarily works on the raga system. So, what is the raga? Actually, Ranjayati iti raga. So, a raga is something that has the color of the notes, that has the rang, and it appeals to our auditory sensation. It is so pleasing to the ear. So, what is pleasing? The, the vibrations that are in harmony with each other, they are the pleasing vibrations. Maybe I'm playing a sitar and suddenly I hear that there is a big kind of someone is blowing the horn outside, or maybe there is a cracker bursting. So that sound, that vibration is in disharmony with the frequency in which the notes are vibrating in my raga. And so that becomes a dissonant sound, or that becomes a very discordant sound. It's not in consonance with what I'm playing. Basically, I'm not a theoretic scholar because whatever I am going to tell you or demonstrate is from my own experience as a musician. So, in theory, of course, our scholar students
They have already demonstrated many interesting points and many interesting examples of consonants. Like just now, I heard about a scholarly presentation on the prayog of Pancham in the Madhyam Swaras. So likewise, also we have many other ragas where I'm going to show you the prayog of certain notes, very rarely used, but how they add into the aesthetic beauty of the raga. Now this is a noon afternoon time. So let me begin with a rag, say Raga Bhimpalasi. So in Raga Bhimpalasi, we have consonant notes sa, ma, ga, ni, and in addition we have a nas and madhyam. This is a very, very interesting combination of the raga. So how every note vibrates with every other note and how the microtones play a very important role here is something that I'm just trying to explore through my sitar. Now, the sitar here, since we have a fixed kind of tuning, so this is the middle string sa, the barge part, which is tuned in the low octave sa. With reference to this sa, we have the main string. So this is the juri, and then we come to the main string. I'm sorry, this is the barge string, the main string, that is the ma. So the juri and the ma, sa and ma are in consonants. And the drone, the tanpura, which is playing the sa, it is continuously giving me that backup because it is helping to dissolve any other overtone. When I hit the sa, so there is one sa, but along with that, there are many, many other overtones. You see, if you look at a distance, you can see that this string, it is vibrating. And then it stabilizes. Then the sa from the taraf resonates. Now it resonates. So when it stabilizes, it resonates. And that point of stabilizing allows us to tune this sa along with the tanpura. So we just have to hit and wait, not just hit and start tuning. So we have to strum and then wait and then tune. Now, the other thing which I would like to tell you about tuning is that when we are tuning an instrument, I find like many learners of sitar, they just straight away take the sitar and they start tuning it. They just, if they have to raise a higher pitch, they go on screwing the string and it snaps because the string has a certain tension and you know that this tension fluctuates according to the weather and the humidity condition. So while tuning, we should remember that when you are tuning the koti, the first thing is to unscrew, make it loose. So let it vibrate at a lower frequency. And then gradually you strum, you listen, and slowly you increase the frequency. This should be done for each and every koti, for each and every string. So first you tune it down and then slowly, slowly you tune it up. And so also for the taraf, the sympathetic strings. Otherwise, what happens due to that sudden tension, the string is going to snap. So that is a kind of problem that most of the learners, especially the beginners, face.
And they should remember that this is a very crucial point in tuning. First, tune down, let it vibrate slowly, and then increase it for the higher frequencies. The other thing is very often sur utar jata hai. Why? Why? Why does that happen? That happens because many a time, we tune like this. I have seen like the sitar is here and students are tuning just like this. The sitar is here, you are tuning like this. No, this is not the right method of tuning. To tune the instrument, always put the pressure towards gravity. So when I am tuning the sa and the barred string ma, I have to put my sitar in this position, just this position, okay, horizontally here. And then put the vertical pressure and then slowly tune. Similarly, when we are tuning these lateral kutis, what we should do is we have to place the sitar like this sideway on our knee. Then the pressure should be vertical. Put the pressure vertically and then gradually tune it. Then you will find that Sur Utarta Nahi, it will stand. For the main string also it's very difficult because if the main string snaps, the string goes on, like when you tune, the string goes on lengthening. And so you find it's always going down and down. So to fix the main string before you play, you have to wait. And you have to allow the string just so much, allow to just stretch. So after stretching, this string will finally at a certain point of time, it will just stabilize. And what we do is from different positions, we have to pull and then check that whether now the tune is stable. So this is the basic rule when we are tuned. But the other thing is the consonants. So now for with ma, here again we have the pancham string. So with sa and pa, they are consonant to each other. So for the barred string, it's sa and madhyam. And see for the pancham, the number 2 gauge string, it's ma and pa, again sa and pa. So sa and pa. For the madhyam scale ragas, you have to tune down it to ma. So for a rag like maybe Malkosh, this will be. Now in the 3.5 octave, obviously on every octave, the low octave sa will be consonant with the middle octave sa, and again with the, because they are all the double frequency. So here, this is sa, and now for my Kharaj Pancham strings, the bar strings, with reference again to the middle string, and when you are tuning perfectly, you will find that when you are hitting on that Kharaj Pancham, the middle string sa is also going to vibrate. That is also going to vibrate a little. And then with this again, the Kharaj. We have to wait. There are so many frequencies on the Kharaj. Finally, it stabilizes and we get the sound. So the most important thing for tuning this instrument is
Nowadays, we of course have a pitch pipe, a tuner in front of us, and it has become very easy or maybe very scientific to tune the instruments. But when we learned how to tune the instrument, it was basically with the ear, with that inner sense of the frequencies. So it's very important for Indian music, the training of the ears. Because when we are performing, during performance, sur utar jata hai, and you really don't have a tuner in front of you for every time if some note is just not in consonance. You don't always look at the tuner to tell you whether that swar has gone down or whether that swar has just become a higher pitch. So in that case, your tuner has to be your ear. So training of the ears is of utmost importance, without which it is difficult to play any Indian instrument, any non-percussion or percussion, whatever, because these are natural instruments, and depending on the weather, the strings are prone to expanding or contracting. It often happens with us that we are playing in the auditorium. Before that, we were not in the AC, and you go to the auditorium and it's the AC. So what happens is immediately all the strings, they just, everything gets dissonant. And again, to bring in that consonance, you have to very carefully and attentively listen to the tantura. Listen to the tantura, tune the kharaj, this, the juri first, then tune the kharaj, the baj, and finally the chikari strings. Now, it is not really an easy task to do that right away when you are performing, because your whole focus is on what you are going to play. And then, if you have to just tune the sitar or whatever instrument, the natural instrument, it is really hard unless your ear is very much trained. Then the spotlight and all those halogen lights are on you. And you find that when you are playing a gamak or a mir, suddenly sur utar jata. You find that there is some disharmony somewhere, is besura, it's out of tune. And again, you have these mankas. So these mankas here, you always try to keep them in a kind of mid position. Don't push them too far, because if you push them too far for the minor tunings on stage, you can't push it further. So keep them in a middle position so that for the minor tune shifts, you can just, usually the pitch goes down. For the sitar, it normally goes down, the pitch doesn't go up for the strings. So what you do is you push it little by little and again adjust the strings, marking the consonants with sa. So the ma and the sa, they are consonant with each other. And also here you have the shikari. One is the middle octave sa, and you always have the drone, the tanpura. What it does, it dissolves all the unwanted sounds, and it always gives you that sa, pa, constant consonants, which are the achal swar, and they help you in tuning all the other notes. Now in Raga Bhimpalasi,
Now, we theoretically already know that which are the consonant notes. Like we know sa and ma, ga and ni, they will be the consonant notes. And also sa and pa. Now, with so many varieties of notes, it is the question like how will we arrange the notes to make it aesthetically pleasant? How will we arrange the notes? Like, so every raga has a form, and that form has been prepared by our ancient scholars. So that is the rag bhav and the rag roop, which we have to maintain while we are improvising. So whatever improvisation we are doing is just the arrangement, the permutation and combination of the notes, the application of the microtones or the shrutis, and the application of the Nash swar, and also on which notes we are giving more emphasis, and also the control of the volume of the notes for the aesthetic effect. If we always go on playing at the same level without controlling the volume, then we cannot express the mood. I think I'll also have to do a bit of singing with the playing because on the net media sometimes the instrument sound doesn't reach you very clearly. Now, how I am transforming the song into the instrumental expression. So do we don't play? No. So that this knee will actually come from the pa. So we are arriving at the consonants also by with the help of the sparsh swars. The sparsh swars, they also help us, they enable us to arrive at that consonants. Again, a different consonants when we are approaching the knee from sa. Ni sa re. So sa, here we have also touched the shruti of re. Sa, that's almost imperceptible, but it is there. Ni sa ga. See how wonderfully ni and ga, they are in consonance with the final resolution on sa. Then re is there. Theoretically, see, ni and re or re and ga are not consonant notes. But for the sake of the raga, it is the consonants of the notes in a raga. So that is what we are saying, the ever vibrant consonants. So it's not always the consonants between fixed notes, but also these are actually clusters of notes that are forming the consonants. Ni, sa, ma, ma.
Now, what is very interesting is when I am taking the meal from sa to ma, I'm taking it straight sa and ma, they are consonants. But ma, ma, how am I balancing here? Because according to theory, the theory doesn't say that komal ga and shuddha ma are consonant notes. It doesn't say. But the beauty of that very lonely sadness, that nostalgic mood is coming out through and again here also when I'm playing ma, I'm touching the shruti of Ganga. Re Salma. So re, ni, actually ga and ni are consonant, but see how sa is balancing re and ni. Re, ni, salma. Now just see how it can be dissonant if I play re, ni, ga. It's not working. Re, ni, ga. Ha, ha, ha. No, this is not like Bhimpalasi. So although ni and ga are consonant, so in Bhimpalasi it's the sa which is acting as the mediator. It is resolving that dissonance between the ni, re, between ni and re. So sa ga ma ma. Ga ma pa ni. Normally we know that re and dha are consonant notes. But in Bhimpalasi, re and dha are not in consonants. That is also something very, very interesting. See, these are not consonants in Bhimpalasi. Whereas we find that ga and ni are consonants, sa and ma are consonants, and we are arriving at these where there is non-consonants, we are resolving through pancham and sa. So, pa re pa ra pa ma ga ma pa ni ma ra ni sa ga. Now, when I move from the Raga Bhimpalasi to Paddik, here the consonant is the consonant note with ga is the Shuddhani. So see here, it's not the Shuddha ga and the Shuddhani, but the Komal ga and the Shuddhani with pa and dha intervening. So
always need the help of the sa and the pa to resolve any kind of note which is not in direct consonance with the other notes of the raga. This is something that I have just realized while playing, that we have to take the help of pancham, sa, or in some ragas, madhyam, just to arrange the disconsonant notes. So this is the color of Paddi. Here again, pa is balancing. Suppose we didn't use the pa that often, then the raga expression wouldn't have come. Like ni ma ni sa ni ra ga ma ma. No, the raga color is not coming. So we need this pancham only to highlight the color, the ranjani of Paddik, that bright color. Gama pani, that color of sunset, that tinge. Now, there are many more ragas which I would have liked to explore, but I think it's already time, and through many more ragas, like we have the night raga, Marwa, Puriya, and Shohini. They all have the same notes, but how the difference in consonants distinguishes one rag from the other aesthetically. I'll just show you that cluster of Marwa, Puriya, and Shohini. This is a very peculiar example because we don't have either Shuddhama or we don't have the Pancham. Instead, we have the Gandhar, the Shuddha Dhaivat, the Shuddha Gandhar, and the Shuddhani. So in Marwa and Puriya both we have, and then in Puriya the focus is on Ni and Ga. I'm touching a set of shrutis when I'm playing the Re from Ga. And again, one set of microtones. Now here, Ni, Re, Ga, they are in consonants. When Re, also the Tivrama, Ma, Re, Ma, Re, Ga. So this Tivrama, the first Shruti of Ma, that is also, I'm sorry, the first Shruti of Pancham is there. In Marwa, whereas it's Shuddha and Re consonants.
Then the it's stabilizing. The consonants, the two notes are resolving in sa. And see, on this instrument, we are continuously strumming the sa and the chikari to give us that tanpura-like resonance, that vibration all the time. So it's ever vibrant, by which I mean that we are not playing single notes, but we are playing notes always in consonance with the sa and with the pancham or with the madhyam, because we are continuously striking these strings when we are playing. So dha, re, ni, they are all in neutral consonants. For Shohini again, since this is Uttarang Rag, the Madhali so ga, ni, and strangely enough, it's the Tivra Madhyam and the Dhaivat, which are in consonants. So Tivra Madhyam is the lower Shruti of Pancham, and then we have the Dhaivat. So it is, if we go rag by rag, it is really, really very, very interesting that whatever may be the theory of consonants according to the Shastra, in our experience, they are all mutually consonnating notes in the raga music. And what, as artists, we have to remember is how to arrange the notes and how to resolve them so that we do not break the form of the raga, but we can present an aesthetically pleasing performance. Uh, there is much more to say, like the rasa and bhav individually. You have to take up raga by rag, and that really requires a very, very long time to show the rasa bhav. But I think I have been able to give you a more or less a summarized impression of what we mean by consonants when we are presenting and tuning. So much, Neetaji. It was indeed a wonderful session. You began with Sa being Sa and Pancham being Achal Swaras, and how they play important role not just in the theory or shastras, but actually in the tuning. And there's so many points you have covered with the topic of tuning, that not only the sitar students would benefit, but I think students of other would also benefit. That how the AC affects the instruments, how the halogen lights affect the instruments, and also you very beautifully brought up the effect of sympathetic notes and harmonics, and how they, if you tune them finely in your tuning, how they affect and enrich your overall performance. So that was really great. And also how the money should be adjusted, that is also for the vocal students. So there was for everyone, not only for sitar students. And lastly, but not leastly, that consonants does not have to be, if the consonance is between two notes, they may not sound pleasing if they come in proper reference and proper sankati.
that takes us to somewhere closer to Raganga and Sangati and Chalan. So I think it would help everyone, be it vocal students or sitar students. There was so much to learn from. So Nitaji, I thank you from the bottom of our hearts for being amongst us today and And enlightening. I'm really grateful to all of you for inviting such a very like ordinary person like me, for inviting me to speak in this very, very scholarly seminar, and where you are discussing a very rich topic, a very rich topic. Thank you, Nitaji. Your remarks encourage us more to do better. Thank you so much. Now I hand over the mic to Dr. Kante for the next conducting the next session. Thank you. Hello, has Umaji joined? Vidula madam? Speaker, am I audible? Yes, ma'am. Ma'am, join कर लिया उमा जी ने. Okay. Yes, ma'am. Should I start? Yes, please do. Yeah. Good afternoon. I feel really very honored to introduce today's this seminar's last speaker, this session's last speaker, Vidushi Uma Dograji. She is a Kathak exponent. She is a leading Kathak exponent and one of the most powerful and compelling dancers of India. Honored as Pandita, Uma Dogra is the senior-most Gandaband Shagir of late Pandit Durga Lalji, the legendary Kathak maestro from Jaipur. Uma Dogra ji has been enthralling audiences all over India and abroad for more than 48 years now. For her great contribution as a dancer, teacher, and choreographer, she has been conferred with the prestigious awards, to name a few are Sangeet Natak Academy Puraskar by Government of India, Maharashtra Rajakiya Sanskritik Award and Maharashtra Gaurav Samman by Government of Maharashtra, Doctor of Art felicitated by ITM University, Raipur. She is the founder and managing trustee of Samaved Society for Performing Arts to promote Indian classical dance and music. The society holds Pandit Durgalal Festival of Dance and Music and the Raindrops Festival of Indian Classical Dance for the last 31 years. Under the banner of Uma Dogra's School of Kathak, Umaji has been passing the tradition of classical dance for the last 30 years and has trained many young, beautiful dancers. She has made a film in memory of her guru, Nirvana through Dance, Pandit Durgalalji, and has written a book in praise of Kathak. It talks about her journey as a dancer and the elements of Kathak. Uma Dogra ji follows her mentor, Dr. Daisakyu Aikeda's mission of promoting peace and happiness through art and culture. So, over to you, Umaji. I request you to start your presentation. Namaskar. Namaskar. So I just want to know, Chetna ji, are you showing first the video or shall I start my talk? Speaker? Yes, we are showing the video first. Okay, thank you.
There was no sound. नहीं है चेंज करो सखिया करे ढिढोरी 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 सखिया करे ढिढोरी कहे हंस के निगोरी पूछे क्यों घगरी सच कह दे शर्म के मारे मैं मर जाऊं मैं तसं वाजत होता मोस्टली आणला मी तुला ऐकायचं आहे का ऐकायचं आहे ना तुला मर जाऊं शाम तुम जीते और मैं हारी हारी मरो शाम हिचकारी ना मरो शाम So, Wonderful. thank you very much. Can you hear me, everyone? Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Namaskar, and thank you very much for, I truly feel very honored to be part of this international conference held by the Department of Music
of University of Mumbai. And thank you very much for inviting me to share my views about the subject which is given to me. Thank you, Chetna Pathakji, and everybody who is connected today. You know, it is always a very, I feel very excited. It's a really an excitement, you know, when I get chance to talk to the dynamic friends and, you know, the people around about my subject. It always gives me a pleasure. So I feel always going back to A for Apple and revisiting my my learning, whatever I have learned. And believe me, today I'm not going to give you any lecture. I'm not here for a lecture. I'm going to share my journey and share my experience. But in all these 56 years as a student of dance, what I have learned and what I have thought about it. I totally believe in the practical things as dance. Music is all a performing art, and performing art means you there and there only you have to prove yourself. There is not given any other chance to redo it, you know. So well, thank you very much once again, and I just want to tell that today the subject which is given to me by the Chetna ma'am is that interrelationship between dance, poetry, and music. And why I wanted to show the video first, because that was the real example of what is the connection between the poetry, music, and dance. You know, all these three things, how it creates the magic. So each one of maybe have its own individuality or अस्तित्व, अपने आप में एक अस्तित्व होगा उसका, पर जब वो तीनों कलाएं मिलती हैं तो उनका इम्पैक्ट अलग होता है. एंड यू नो, जैसे संस्कृत में कहा जाता है, एक बहुत फेमस से है जो हम डांसर्स लोग हमेशा अपनी नोटबुक के फ्रंट पेज पे लिखते हैं. इट इज दैट गीतम वाद्यम एवं नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते. तो तीनों के बिना संगीत की उत्पत्ति नहीं होती है. संगीत तभी बनता है जब सारी कलाएं मिलके उसको एक बनाती हैं. तो एंड देयर इज अ डीप कनेक्शन, देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द यू नो साहित्य, जो पोइट्री जिसको हम कहते हैं, साहित्य हो बेशक गद्य हो या पद्य. सो उनका आपस का जो एक स्ट्रॉन्ग लिंक है वो उसको बहुत खूबसूरत बना देता है. तीनों कलाएं अपने आप में बहुत अलग ढंग से भी परिपूर्ण हैं, बट एट द सेम टाइम जब तीनों एक साथ मिलती हैं, तीनों विधाएं, तो एक अलग जॉय, एक का स्त्रोत्र कहते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है. सो like what I feel, that dance is a self-expression, you know, or जो beautifully displayed to evoke an aesthetic bliss with dance. And it's not only for the spectator, even as well as for oneself also. Within also we feel that bliss. And when often you know express the thoughts, we often express the thoughts through words, the poetry, the sahitya. And even poetry has many layers. If one poet has written one line, it doesn't mean that only one line has that meaning. No, उसके भी लेयर्स होती हैं, उसके भी भाव होते हैं, अनुभाव होते हैं, उसकी अनुभूतियां होती हैं. तो हम जो डांसर्स लोग हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन जब करते हैं, उसकी एक एक लेयर को डिफरेंट वेज में हम उसको पोर्ट्रे करते हैं. एंड देन उसके बाद अपना एक सेल्फ एक्सप्रेशन निकलता है डांसर का उस पोइट्री को लेकर. बिकॉज एवरी आर्टिस्ट हैज इट्स ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू अबाउट द सब्जेक्ट. एक ही लाइन को मैं किसी तरह से कहूंगी, उसी लाइन को कोई दूसरी डांसर दूसरे ढंग से कहेगी, उसी लाइन को एक म्यूजिशियन अलग ढंग से गा भी सकता है. सो वो इंटरप्रिटेशन एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, बट एट द सेम टाइम उसका उस पोएट्री को, उस म्यूजिक को, उस डांस को मिलाकर एक रस की उत्पत्ति होती है जिसको कहते हैं आनंद. और कोई भी आर्ट फॉर्म जब तक वो आनंद की उत्पत्ति नहीं होती है तो वो रसविहीन है. हम स्टेज पे बेशक संयोग रस करें
या वियोग रस करें, आनंद की उत्पत्ति होनी चाहिए. That rasa should reach to the spectator, and that rasa we should also feel within. Till the time we don't feel within, it will not reach out to the audience, the rasikas. So जैसे एक छोटा सा एक बहुत ही डे टू डे का मैं आपको एग्जांपल बताना चाहती हूँ कि जैसे एक शब्द है, मान लीजिए हम कोई भी एक शब्द लेते हैं. ओके, हम लेते हैं नमस्ते. सो जब हम नमस्ते, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा कि क्या भाव है मेरा उस वक्त. मैं हाथ जोड़ती हूँ, एक मुद्रा को लेती हूँ, नमस्ते. Again, it's more clearer now. So when I say namaste, so I have put my own inner bhava in it. That tone makes that namaste. That tone has given it a different meaning altogether. That person is very happy to meet to you. So that is how. That is what I am trying to say, that when three together merges, Sahitya, music and the Angik, means dance, when merges together, uska maza, uska lutf alag hota hai. You know, जैसे कि जो साहित्य है, लिटरेचर है, जो पोइट्री है, that leads to our intellect. एक इंटेलिजेंस क्रिएट करता है. जब आप पढ़ लिख जाते हैं तो आप और भी ज्यादा वाइज हो जाते हैं. You know so many things. तो वो आपके इंटेलेक्ट को लीड करता है. द साहित्य. वो जो डांस है वो आपकी ग्रेस को, आपकी बॉडी फिटनेस को, आपकी लोच को, उसको लीड करता है. एंड म्यूजिक लीड्स टू it is actually a food for the soul. इसीलिए शायद हमारे शास्त्रों में उत्तम गाना कहा गया है. द म्यूजिक जो है, उसमें जो रस मिलता है, उससे जो रस मिलता है आर्टिस्ट को, वो उसके इनर एक्सप्रेशंस को बाहर पोर्ट्रे करता है. मैं कोई भी एक लाइन अगर बोलती हूँ, अगर उसमें एक म्यूजिक की कमी रह जाती है तो मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाता है उसको पोर्ट्रे करना. द मोमेंट द रागा गिव्स दैट लेयर टू दैट पोइट्री, दैट रागा मेक्स इट मोर इफेक्टिव. रागा मीन्स द म्यूजिक में जो हमारी बहुत सारी राग रागनियां हैं. सो दैट्स हाउ देयर इज ए इंटरकनेक्शन बिटवीन ऑल दीज थ्री. मैं कथक डांसर हूँ, आपको शायद मालूम होगा. एंड I started learning Kathak when I was 6.5 years old. Today I'm 65 years old woman. So almost 66 decades I'm learning Kathak, and I'm now teaching also Kathak. So मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी जर्नी है डांस की, उसमें मेरे को हर मेरी लाइफ की उस पड़ाव ने मुझे मेरे डांस में हेल्प किया. Like I did my graduation in Hindi honors. That Sahitya actually gave me a lot of things to my dance. It helped me to understand dance more. I read Sanskrit, Bhas, Kalidas. I read all the authors from the Hindi Sahitya. Jayashankar Prasad ji, Mahadevi Verma ji, Maithili Sharan Gupta ji. जयशंकर प्रसाद जी की तो मैंने कामायनी को डांस भी किया. तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है कि कोई भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो, उसको साहित्य से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है. उसके बिना इट इज इम्पॉसिबल टू बिकम ए फुल आर्टिस्ट. जब तीनों विधाओं को लेके आप साथ में चलते हैं तो आप कंप्लीट होते हैं. जैसे हमारा जो कथक शब्द है, जो कथक है, ये शब्द की उत्पत्ति ही संस्कृत के वर्ड से हुई है. कथ, कहना. जो हम अक्सर कहते भी हैं कि कथा कहे सो कथक कहिए. जो आदमी कथा कहता है वही आप सोच लीजिए वो कथक डांसर है. हम लोग बेसिकली कथाकार ही कहे जाते थे. हिंदुस्तान का जो जितने भी आर्ट फॉर्म है वो एक्चुअली मंदिरों से ही निकली हैं.
वो गायन हो, वादन हो, या डांस हो, या पोएट्री हो। उस जमाने, आज हम यूनिवर्सिटीज में बैठ के, कॉलेजेस में बैठ के हम स्टडी करते हैं, उस वक्त एक ही जरिया होता था टू बी एन एजुकेटेड वाज going to the temples and learning and listening the kathas of Puranas and Vedas and Upanishads. There was a class of people who used to narrate the stories. They were the master of all three forms. They used to sing, they used to dance, they used to play the mridangam, dholak, whatever it was. And they were gyata of all these texts. वो एक अलग कैटेगरी थी उन लोगों की, देवर कथाकार्स। एंड टुडे ऑल्सो, आज भी हमारे यहाँ पे डांसर को तभी कंप्लीट माना जाता है जब उसको थोड़ा सा संगीत का ज्ञान हो। मैं ये नहीं कहती कि आप रागदारी में गाना गाते हैं, नो, बट यू शुड, आपके कान सुरीले होने चाहिए। जो आप करते हैं आपको गाना आना चाहिए, जो आप दूसरों को सिखाने वाले हैं आपको बोलना आना चाहिए। वी आर कथावाचक। सो ये जो कथाकार होते थे वो तीनों कलाओं में निपुण होते थे। उनका ज्ञान, उनकी जो उपज थी वो उन तीनों में इक्वली थी। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पुराणों की कथा कहते थे, वो ताल में बड़े विद्वान थे। और बिना सुर, ताल और पोइट्री के वैसे भी डांसर कंप्लीट नहीं है। मैं इसको अपने सारे स्टूडेंट्स को भी हमेशा कहती हूँ कि till the time you will not read, it's not only the poetry, it's not only the Indian poetry, it is not, you have to, you should be well read. There are so many philosophers from different countries, different languages. You must understand the philosophy. आपका ये जो है ना मस्तिष्क, ये इसको आप बढ़ाइए, इसमें नॉलेज को, विजडम को, और डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर इसको एनरिच करिए। जिस दिन ये एनरिच हो जाएगा, ऑटोमेटिकली योर हार्ट विल बी फुल, इट विल बी मोर एनरिच्ड, देयर विल बी मोर भावास, बिकॉज यू नो नाउ द आर्ट फॉर्म ऑफ अदर प्लेसेस ऑल्सो। जैसे मैं छोटी सी एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि जैसे रामचरितमानस का कोई भी आप दोहा कहिए, जो राइटर्स पुराने जमाने में होते थे या आज के भी जो राइटर हैं, हर चीज म्यूजिक में लिखी जाती थी। पूरी की पूरी रामायण, पूरी की पूरी महाभारत एक टेम्पो में है। रामचरितमानस का कोई भी दोहा आप उठा लीजिए, कुछ भी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। म्यूजिक, द रिदम, हर बोल में रिदम है। ऐसा नहीं कि कोई एक पंक्ति लिख दी उसमें रिदम नहीं, मीटर में लिखा जाता था, गा के सुनाया जाता था। हो सकता है उस वक्त लोगों को इतनी रागदारियां ना आती हों, बट उसका अपना एक बोलने का अंदाज जो होता था वो म्यूजिकल होता था। और फिर आज के भी टाइम पे, मैं तो रीतिकाल के पोएट्स की भी अगर बात करूं, महादेवी वर्मा जी को मैंने पढ़ा। महादेवी वर्मा जी की एक पोएम है इंतजार, इतनी खूबसूरत पोएट्री है। तो हम लोग कई डांसर्स कहते थे पोएट्री पे कैसे डांस किया जाए, but poetry is written in a rhythm, in a meter. You can, adapt it in the dance, in a musical composition. So, जैसे उनकी वो पोएट्री में आपको बोल के बताना चाहते हैं। शुरू में मैं आपको उसका रिदम बताती हूँ कैसे वो कही गई है, फिर मैं आपको नॉर्मल सुनाऊंगी, so that you should understand the भाव, the dance behind that. डांस का मतलब फिजिकल थे, हाथों पैरों का मारना पीटना नहीं है सिर्फ डांस। डांस कम्स फ्रॉम हियर। इसके बारे में भी मैं आपसे एक बात करूंगी बाद में, पर मैं पहले महादेवी वर्मा जी की पोइट्री आपको बताती हूँ। कितने सुंदर भाव हैं उसमें। वो कहते हैं, जो तुम आ जाते एक बार, अभी मैं पहले रिधम में बोलती हूँ, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश पथ में बिछ
जाते बन पराग, जो तुम आ जाते एक बार। तो खट खट टक 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 टक, वो उसमें रिदम में पिरोया हुआ है। नाउ लिसन टू दिस पोएट्री। कितना खूबसूरत अभिनय पक्ष। डांस में दो पक्ष होते हैं, टेक्निक पार्ट एंड द अभिनय पार्ट, वेयर यू शो योर इमोशंस, योर एक्सप्रेशंस। सो नाउ शी इज सेइंग, जो तुम आ जाते एक बार, अगर एक बार भी तुम वापस आ जाते, कितनी करुणा, कितने संदेश, कितनी बातें तुमसे कहने की, कितने दिल के दुख तुमसे शेयर करने थे, कितनी करुणा, कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पर आग। कि तुम्हारे रास्ते में मैं, मेरे आंसू, मेरे अश्रु, मेरी खुशियां, मेरी बातें तुम्हारे पथ में बिछ जाती, पथ में बिछ जाते बन पराग। फूलों का जो पराग होता है उसकी खुशबू की तरह वो तुम्हारे पथ में बिखर जाते। गाता प्राणों का तार तार, कि इतनी खुशी होती है मुझे तुम्हारे आने से कि मेरे प्राण जो है उनका एक एक तार झंझना उठता। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग। गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। राग का क्या नाम रखा उसमें? उन्माद, जिसमें जिसमें एंजॉय है, जॉय है, उसमें तुम्हारे आने की खुशी है। ठीक है, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते पथ पगार। कि मेरे अश्रु, इतनी खुशी होती, खुशी के आंसुओं से तुम्हारे पथ को मैं पगार देती, उसको साफ कर देती। जैसे हम कोई आता है तो पथ को साफ करते हैं, दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। आंसू लेते पथ पगार, जो तुम आ जाते एक बार। हंस उठते पल में आद्र नयन, कि हंस उठते पल में आद्र नयन। आद्र नयन कहते हैं जो कि हमेशा रोते रहे, जो दुखी हैं। हंस उठते पल में आद्र नयन, घुल जाता होठों से विषाद। कि इन होठों से दुख दूर हो जाता। छा जाता जीवन में बसंत, छा जाता जीवन में वसंत, लुट जाता चिर संचित विराग। जो इतने टाइम से एक विराग, एक विछोह था हमारे बीच में, चिर संचित, जो बहुत सालों से था, लुट जाता चिर संचित विराग। आंखें देती सर्वस्व वार, जो तुम आ जाते एक बार। मुझे तो ऐसा लगता है मुझे इसको खड़े होके करने की भी जरूरत नहीं है, मैं बैठ के भी इसके एक्सप्रेशन अगर करूं तो अपने आप में डांस है। इतनी इसमें पोएट की पोएट्री में इतना जबरदस्त भाव छिपा हुआ है, जिस भाव को हम आर्टिस्ट डांसर लेते हैं और म्यूजिक उसकी फीलिंग को उस राग में, इसको अगर भैरवी में पिरो दिया जाए तो उसमें उसके उन शब्दों को क्या निखार मिलेगा। और फिर डांसर अपने भंगिमाओं से, अपने नयनों से, अपने हस्तक से, अपने उन चीजों से उसको उजागर करेगा। तो अपने आप में एक कंप्लीट पिक्चर जब स्पेक्टेटर देखता है, जब रसिकास देखते हैं, जब ऑडियंस देखती है तो मंत्र मुग्ध होती है। तो तीनों जब मिलते हैं उसका असर ऐसा है जैसे अमृत पिया हो। उसका जो नशा है वो किसी भी नशे से बढ़कर है। जैसे हमारे यहाँ पर एक और, हाँ, मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपको एक चीज कहूंगी, वो मैं भूल जाऊं इससे पहले मैं वो बताना चाहती हूँ कि हमारे डांस में हम लोगों को एज ए स्टूडेंट से सिखाया जाता है कि डांस क्या है, कहाँ पे जाके डांस कंप्लीट होता है। तो इसमें कहते हैं कि यतो हस्तो, जहां पे मान लीजिए मैंने ये मुद्रा बनाई, यतो हस्तो ततो दृष्टि, उसी को देखिए, ततो दृष्टि, जतो दृष्टि ततो मना। आप उसको, मन है आपका, यतो मना ततो भावा, यतो भावा ततो रसा। कि जब तक रस की उत्पत्ति नहीं होगी, मैं ये चीज ऐसे भी दिखा के ऐसे भी कर सकती हूँ, इसमें कोई भाव नहीं है। भाव कब होता है? जब आप हस्तक बनाते हैं, आप उसको देखते हैं, आप उसके अंदर एक्सप्रेशन डालते हैं, आप उसके अंदर, तभी
उसके अंदर रस की उत्पत्ति होती है। तो ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग डांसर को ये चीज सिखाई जाती है कि रस की उत्पत्ति जब तक नहीं है डांस इनकम्प्लीट है। अब मैं थोड़ा सा अपने डांस फॉर्म को लेकर बात करूंगी अबाउट म्यूजिक। कथक डांस एक ऐसा इकलौती डांस आर्ट फॉर्म है जिसमें आर्टिस्ट जो है वो म्यूजिक का उतना ही ज्ञाता होता है, रिदम का, स्पेशली रिदम का, लय का। लय के, चलो लय में सभी आर्ट फॉर्म, सारे आर्टिस्ट, हर आर्ट फॉर्म के आर्टिस्ट ज्ञाता होते हैं, बट स्पेशली म्यूजिक। हमारे यहाँ पे जब हम कथक नृत्य करते हैं हमारे पीछे एक नगमा चलता है। जैसे मान लीजिए मैं 3 ताल कर रही हूँ, 3 ताल में 16 बीट्स होती हैं, तो तबला प्लेयर अपना ठेका बजाता है, पर डांस सिर्फ रिदम के ठक ठक पे नहीं चलता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें एक मूड के हिसाब से करनी पड़ती है डांसर को। डांस इज नॉट ओनली rhythmic patterns, it has its own grace and it has own its उसके मूवमेंट में एक मजा है, एक लोच है, एक खनक है। वो खनक कहाँ से आती है? म्यूजिक से। तो मुझे एवरी टाइम उसको काउंट नहीं करना पड़ता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. No, this way I cannot do it. This way I cannot enjoy my dance, and I can't give a joy to others also. तो उसके पीछे एक da 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 ra ra da da ra da ra re sa da 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 da। हम म्यूजिकल नोट्स में उसको पिरो देते हैं और अलग अलग नोट से उठ के उसकी हम तिहाइयां बनाते हैं, म्यूजिकल तिहाइयां बनाते हैं। हम एवरी टाइम, द होल टाइम हम तबले के या बीट पे या इट्स नॉट ए मैथमेटिक, although every compositions are in that meter which is in a 16 beats or 17 beats or a 15 beats or a 10 beats, जिसके नाम है जब ताल, शिखर ताल, पंचम सवारी। बट एट द सेम टाइम उसका नगमा बजता है जो इंस्ट्रूमेंट पे बजता है, सारंगी पे बजता है या हारमोनियम पे बजता है, वो जाके हमें एक म्यूजिकल एक फील देता है जिस पे डांसर डांस करता है। फिर उसके ऊपर मजा तब आता है कि जब उसी नगमे को आप वर्ड्स में पिरो देते हैं, आप पोइट्री को उसमें समा लेते हैं उसमें। ऐसे बहुत सारे, कई बार ऐसा होता है। एक पुराना चलन था जो आज के टाइम पे शायद इतना नहीं है। अभी आजकल नगमा बजता है, डांसर डांस करते हैं, पर पुराने जमाने में जो डांस किया जाता था, एक जैसे ध्रुपद धमार होते थे, है ना, एक कंपोजिशन गाई जा रही है, उसके बीच में उठाने की जाती थी। जैसे धमार ताल की कंपोजिशन है, त धी ट धा, धी न, 14 मात्रा का ताल है, क धी ट धा, धी ट धा, ग दिन खेलत शाम, हम संग होरी खेलत शाम, हम संग हो, दाते दा 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 दिल ट दी ट दा। तो डांसर जो है उसको भी, अभिनय को भी करते हैं, लय को भी दिखाते हैं और गाने को भी एंजॉय करते हैं, उसके भी भाव दिखाते हैं। ये पुराने जमाने का एक स्टाइल था। और हमारे यहाँ पर कथक डांस की, क्योंकि मैं कथक डांसर हूँ, मैं उसको लेके ज्यादा अच्छे ढंग से अथॉरिटी से बात कर सकती हूँ। तो हमारे यहाँ पर कवित लिखे जाते हैं जो डांसर्स लोग खुद लिखते हैं।
जो ये कवियों की रचनाएं नहीं होती हैं, ये गुरुओं की रचनाएं होती हैं, जो डांस गुरुज हैं उन्होंने रची होती हैं। तो उसमें भी बहुत जबरदस्त रिदम होता है, म्यूजिक होता है। डांस तो है ही है, वो तो आपको दिखता ही है डांस, बट उसमें भी म्यूजिक और रिदम बहुत पावरफुल होता है। ऐसे में आपको एक दो कविता बोल के भी दिखाती हूँ और थोड़ा सा एक्सप्रेशन के साथ भी दिखाती हूँ। जैसे ये सात के छंद में जा रहा है, मिश्र जाति में। नदी के तट तिट कदम द्रुम तल नटत नटवर तकत रात दीनत दिन दिन तकत तकत अटक द्रग द्रग थे धागे न धागे तिट तागे न धागे तिट धागे न धागे तागे न तागे झिझी न झिझी कत लच कत झिझी न झिझी कत लचक लचक दंग दिंग दिनत नगत घिनत धा घिन धा कतक दिन धा कतक दिन धा कतक दिन धा दिन धा दिन दिन धा। ये जो कवित है ये कवित लय में भी लिखे गए हैं, म्यूजिकली भी लिखे गए हैं और इन पे डांस भी होता है। जैसे एक और मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब बाद में दूंगी। Let me finish my talk. There is 20 minutes are there, so I will finish before that, much before that, and I will answer your questions also. Only another 5 minutes. Let me complete this whole thing. 5 minutes more. जैसे एक और कविता मैं बताना चाहती हूँ, जो अगेन मैंने उसको झपताल में पिरोया है। दिन 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 दिन। अभी मैं इसको बोल के नहीं दिखाऊंगी, साथ साथ एक्शन भी करूंगी। दिन ना दिन दिन मृग न दृग न झिझी न झिझी कर कोयल कुकू कुकू दिग 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 थे बिजली कर तक 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 धुन तक 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 धुन गजन घन 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 धा 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 धागे तक 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 दिन कत तक धागे तक तक दिगिन धा 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 1 2 3 4 धा 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 दिन दिन। तो खूबसूरत रिदम है, बट मृगन द्रिगन झिझी न झिझी कर कोयल कुकू कुकू दिग 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 थे बिजली कर कर तक 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 धुन गजन घन 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 बादल गरज रहे। उसके बाद डांस के बोलों का इस्तेमाल हुआ है। सो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि डांसर कभी भी कंप्लीट नहीं है जब तक उसको पोएट्री का और म्यूजिक का मजा लेना नहीं आता, और कोई भी म्यूजिशियन कंप्लीट नहीं है जब तक उसकी वो पोएट्री को जस्टिफाई नहीं करता है अपनी सिंगिंग से, उसके भावों को, उसके उन वर्ड्स की लेयर्स को, उसके एक्सप्रेशन को गायन के थ्रू उनको समझाता नहीं है। और वो गायन के थ्रू जब तक उसमें एक्सप्रेशन नहीं भरेगा, वो एक्सप्रेशन क्या है? अभिनय। अभिनय क्या है? डांस। सो आई स्टिल रिमेम्बर हमारी डांस क्लास में राजेंद्र सज्जन मिश्रा जी अक्सर आया करते थे। गुलाम अली खान साहब जो गजल गाते हैं, हमारी शाम की क्लास में आके बैठ जाते थे। डांस देख रहे हैं, तबला बजा रहे हैं कभी कभी, बट व्हाई दे यूज्ड टू कम? आई थिंक it must be like that only. They wanted to see how the dancer portray the poetry and what is the expression behind that, how the dancer take the rhythmic patterns, how we deal with the rhythmic pattern in a graceful manner. De so thei ta ta da, you know, takit ta takit ta कृता थे आ धा 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 धा। तो डांसर सिर्फ बॉडी मूवमेंट्स नहीं है, उसमें एक लोच है, उसमें एक नशा है।
उसमें एक ग्रेस है, इंजॉयमेंट है, जॉय है, हैप्पीनेस है. So yes, this is what I wanted to say, and I want to say 2-3 things only, that like we all know that today the world, not only the whole planet actually is damaged. The whole planet is suffering and is very scared people all around, and the life system has is also threatened, is collapsing because of this pandemic, because of the human. We all have destroyed the planet so badly. We have misused it, we have abused it in a way. So what we can do? Modern civilization, we all will be healthy only when this is my feeling, that only it can be healed when the poetic music and dancing, ये सारी चीजें अगेन अपनी जगह पर वापस आए. Through the music, through the dance, through the poetry, through the nature. You have to protect your nature. You have to protect your planet. Is dancing all over, it is dancing. We have to live in coexistence. We have to respect life. How you cannot feel sad when you see animals are thirsty on the roads? How you cannot feel it when animal is dying without food? How you can sleep? This is very necessary, that we must teach our kids to live in the coexistence. We must respect life. Life is not only a human life, life of plants, life of animals, life of birds. We must respect it. And if we cannot do it, then this planet will be finished in 100, 200 years. So what we are leaving behind for our kids, for the next generation, that we have to think. That we have to, 100% is the time to give a thought about it, what we are leaving behind. And in the end, I would like to say one quote from the leading Buddhist scholar, is Dr. Dasai Kukeda. I quote, "The life and essence of art, whether it's dance, music, poetry, painting, lies in expressing through a wellspring of emotions and universal realm of the human spirit. That is why the great art reaches out beyond ethnic and national barrier to move people all over the world." The best example was Pandit Ravi Shankar Ji. He was not only an Indian artist, he belonged to the world. So I unquote. Thank you very much. Thank you, Chetna ji. I hope because I am a dancer, and through dance only, through my natural, I can only talk. I don't have big fat words to express the thoughts, but I hope I could make it. Yes, thank you. Yes, Chetna ji. Please, someone come. ये नगमा चल रहा है पीछे. एक बार बोलिए.
Thank you. Yes, Chetna ji, if there are any questions, I'm ready to answer them. कोई एक बीच में मेरे साथ ऑडियो पे आ जाए प्लीज, ऐसा मुझे वैक्यूम में बात नहीं करनी. आप अनम्यूट करिए अपने आप को प्लीज, आप म्यूट पे हैं. हाँ हाँ मैडम, बिल्कुल हम आपके साथ में हैं. मैं अभी श्रोताओं में जो उपस्थित है उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर उनकी कोई प्रश्न है इस परफॉर्मेंस या नृत्य से संबंधित जो संवाद का विषय है उसके रिलेटेड, तो बिल्कुल जरूर वो पूछे, क्योंकि आपकी जैसे अनुभवी कलाकार यहाँ आई है तो उनका फायदा बिल्कुल स्टूडेंट्स ने लेना चाहिए. मैं स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर पूछिए. There were many questions I could read. अभी मैं हाँ, मैं चैट में देखते हैं. स्वीकार, आप चैट पढ़ सकते हो क्या? एक कोई पर्सन चैट पढ़े, उसमें कोई क्वेश्चन है? हाँ, तो हाँ. I'm ready to answer. There were many questions actually. Okay. लाइक को पक्का कैसे करें? Yes. करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी याद रात के सिल पर परत निशान. इसका एक ही इसका तरीका है, प्रैक्टिस. आप नगमे के साथ में, आप जो ये मैं कह रही थी ना, नगमे की बात कर रही थी, उस नगमे पे ही आप बेशक ता थे तत आ थे यही करें बेशक, बट इतना कर लें कि वो नगमा जो है आपको, यू हैव टू इंजेक्ट इट. समझ रहे हैं आप? इतना सुनना चाहिए कि आपके सिस्टम में वो इंजेक्ट हो जाना चाहिए. तो इसका और कोई भी और तरीका नहीं है एक्सेप्ट प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. यस, यही एक आंसर है. एक बड़ा क्वेश्चन है, हाउ फार डू यू एक्सेप्ट फ्यूजन एज अ पार्ट ऑफ क्लासिकल डांस इन मॉडर्न एरा? What are your thoughts regarding this drastic change in the taste of audience in this era, as the students somehow see classical dance from the eye of fusion and Bollywood? How much challenging is it for you to create original Atma of Kathak on stage, where the audience belongs to the era of social media platforms? What problems do you face? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज. Yes, your wonderful question. And सबसे पहले मैं आप एक उस क्वेश्चन का जवाब दूंगी, so that the question goes out of this the real art form. So for me, there is no Bollywood dancing in Kathak. There is no Bollywood Kathak. It doesn't exist for us. It is a different art form, dance, Bollywood dance, which I love. I myself love Bollywood dancing. I watch it and I get very happy. But उसका कोई लेना देना क्लासिकल आर्ट फॉर्म से नहीं है. Of course, they are using the steps of our art forms, whether it is a Kathak or a Bharatnatyam. We should be happy that they feel it, that हमारे आर्ट फॉर्म में कोई ऐसी चीज है which is very expressive, they are using it, and we should not feel bad about it. But at the same time, they cannot call it a Bollywood Kathak or a Bollywood Bharatnatyam. No, there is nothing, no terms like that. So let us keep it aside. And if you say कि our gurus, our big gurus have done Bollywood choreography, yes, they have done. They have done to earn money. They have earned. Everybody has to right to earn money. अगर कोई आपको इनवाइट करता है कि उमा जी आप आइए और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में लेक्चर दीजिए, आई एम ए डांसर, सो हाउ आई एम सिटिंग हियर टू गिव लेक्चर? I have no right to talk about like that. But it is always a pleasure to exchange our art forms. So they invited many gurus, Bollywood people, and they did the choreography, but choreography according to the Bollywood. It was nothing to do with the Kathak art form. मैडम, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि आधुनिक युग में शिक्षा का इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि आजीविका की संभावनाएं कुछ उसमें निर्माण हो रही हो करे. और अगर किसी नृत्य, गायन या वादन जैसे आर्ट फॉर्म में ऐसे इस प्रकार की बॉलीवुड के थ्रू या कोई संभावनाएं निर्माण हो रही है, तो उसको हम वेलकम ही करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है ना.
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अपने आर्ट फॉर्म में इतनी शक्ति है कि हम उस पे सरवाइव कर सकते हैं. यू कैन टीच योर ओन आर्ट फॉर्म. व्हाई यू हैव टू टेक ए आपको बॉलीवुड का सहारा क्यों लेना है? आपके अपने आर्ट फॉर्म में अगर आप वोकलिस्ट हैं, आपकी रागदारी में, तो आप नई जनरेशन को आप ट्यूशन देते हैं. देयर आर सो मेनी अदर वेज टू सर्वाइव. यू कैन टीच, यू कैन कोरियोग्राफ, you can talk about it. It's not only that you have to perform. हमारी क्लास में मैं अपने एज ए स्टूडेंट बात करती हूँ. जब मैं गुरुजी की क्लास में थी, हम 4-5 स्टूडेंट्स थे. उसमें कोई हर एक आदमी एक पूरा परफॉर्मर नहीं. ईश्वर किसी किसी को परफॉर्मर बनाता है. तो कोई अच्छा टीचर होता है, कोई अच्छा सिखाता है, सिर्फ कोई अच्छा डांस करता है सिर्फ. इट्स वेरी रेयर you will find a person who is a good teacher, who is a good performer and good choreographer. That becomes the star, that becomes the guru. तो अपनी आर्ट फॉर्म को हम अपने स्टूडेंट्स को साथ के साथ टीचिंग करना भी सिखाते हैं कि जब आपने 5 साल हमसे सीखा, आप छोटे बच्चों को आप उसको ये चीजें सिखाइए, तो यू कैन सर्वाइव. तो बट उसके लिए आप ये सोचे कि आपको डांस आ गया तो अभी आप फिल्मी डांस सिखाएंगे, तो हम एनकरेज नहीं करते हैं. हम टोटली एनकरेज नहीं करते हैं. And yes, the other main question of the girl was the fusion between the other art forms, whether it is a Indian art forms or foreign art forms. So मेरे हिसाब से there is nothing wrong in that. पंडित रविशंकर जी जब बाहर गए थे, उन्होंने भी फ्यूजन जो है बाहर के आर्ट फॉर्म्स के साथ किया था. So then our Indian music became popular. So but आप अपनी आर्ट फॉर्म में क्लियर रहिए, उसमें प्योर रहिए. आप अगर आप टैप डांसर के साथ डांस कर रहे हैं, टैप डांसर वो आपकी तरह नंगे पांव घुंघरू पहन के डांस नहीं कर रहा है, वो अपने जूते पहन के ही डांस कर रहा है, टैप डांसिंग. सो व्हाई यू हैव टू डू कॉम्प्रोमाइज टू योर आर्ट फॉर्म. आप अपना तत्कार लगाइए, अपनी लय के साथ खेलिए, घुंघरू पहन के उसको एंजॉय करिए, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग. हम अपनी आर्ट फॉर्म्स के साथ फ्यूजन करते हैं. मैं जब परफॉर्म करती हूँ, मैंने बहुत बार तब घटम के साथ डांस किया है, मृदंगम के साथ डांस किया है, जो हमारे कथक के साज नहीं है. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग फ्यूजन टू ए क्लासिकल आर्ट फॉर्म, और दैट क्लासिकल कैन बी ए वेस्टर्न क्लासिकल आल्सो. म्यूजिक इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग, वेदर इज ए वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक. Of course, our Indian music is very, very rich. हमें बहुत अफसोस की बात है और बहुत शर्म की बात है कि हम अपने ही रिच कल्चर को पहचानते नहीं हैं. हम उसकी डेप्थ को आज तक समझ नहीं पाए. हम दूसरे कल्चर से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं. हमें लगता है क्योंकि उसका वजह सिर्फ ये है कि दैट इज वेरी इजी. वहां पे सारी चीजें 4 बीट में चलती हैं या 6 बीट में चलती हैं. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रागदारी पे पूरा आधारित है, जिसको सीखने के लिए बहुत टाइम डेडिकेशन है. यू हैव टू गिव टाइम. एंड जैसे आप मेडिकल करके आप डॉक्टर बनते बनते आपको 18 साल लग जाते हैं टू स्टार्ट द प्रैक्टिस. सेम वे मुझे स्टेज पे आने के लिए 15 साल लगे. मेरे गुरु ने स्टेज मुझे 15 साल के बाद दी. अगर आप सोचे कि 3 साल के बाद आप डांसर बन जाएंगे, तो आप अंदर से खोखले ही होंगे. वो 3 साल का सबक 3 साल ही चलेगा. 3 साल के बाद आप फिनिश हो जाएंगे. सो टू सस्टेन you have to have a solid base. Your learning has to be solid. So I hope I answered your question. Thank you, beta. Yeah. और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज और प्रश्न पूछ सकते हैं. किसी ने हैंड रेज किया है? अच्छा, मैं समझती हूँ आपके प्रश्नों का निराकरण हो गया है. जितना बड़ा नाम उतनी ही सिंपल एक पर्सनालिटी हमारे सामने आज हमने देखी है. अगर हम आपको ऐसे ही मिलते थे या हमारे स्टूडेंट आपको देखते थे तो बिल्कुल पता नहीं चलता था कि इतना बड़ा आपका नाम है. लेकिन ये है इसलिए अच्छा संवाद यहाँ हमें एक प्रस्थापित कर पाए हैं, क्योंकि जितनी सिंप्लिसिटी ज्यादा होती है उतना ज्यादा संवाद पॉसिबल अच्छी तरह से हो जाता है. मैडम, आप इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आए और हमारे सब प्रतिभागियों को आपने मार्गदर्शन किया,
तो इसके लिए मैं संगीत विभाग की तरफ से आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं फॉर्मल आभार प्रदर्शन के लिए, क्योंकि आज समाप्ति हो चुकी है इस सेमिनार की, तो डॉक्टर कुणाल इंगरे जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप आभार प्रदर्शन करें। थैंक यू। धन्यवाद अना मैम। मुंबई विश्वविद्यालय के संगीत विभाग द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के समारोपीय कार्यक्रम में आभार व्यक्त करने हेतु मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इस नहीं है गाती। आवाज येतोय ना? जूम अरेंज कर दूं? येतोय सर। प्लीज आप सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सर्वप्रथम मैं हमारे इस 2 दिवसीय ऑनलाइन संगोष्ठी के उद्घाटन समारंभ में प्रमुख अतिथि के रूप में पंडित सुरेश तलवरकर जी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन वो किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए, लेकिन आगे के सत्र में उनका अमूल्य मार्गदर्शन हम सभी को रहा। मैं सब में पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उसके बाद विशेष अतिथि के रूप में पंडित रुनु मुजमदार जी हमारे साथ जुड़े थे। मैं उनका भी तहे दिल से यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। साथ में 2 दिवसीय संगोष्ठी में हमें जो जिन जिन विद्वानों का मार्गदर्शकों का हमें मार्गदर्शन मिला है, जिनका अभी बहुत ही बढ़िया अभी सेशन हुआ है, विदुषी उमा डोगरा जी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। नमस्कार मैम। और साथ में डॉक्टर नीता नाग जी जो हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी थी। उसके बाद में केदार नाफड़े जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हम सभी को किया, वो हमारे साथ अमेरिका से जुड़े थे। उन्हीं के साथ में डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी मुंबई, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक ऐसे इनके सभी के सत्र रहे और हम सभी को इससे बहुत फायदा हुआ है। साथ ही में मैं हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब सुहास पेडनेकर जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और साथ ही में प्रो वाइस चांसलर रविंद्र कुलकर्णी जी और रजिस्ट्रार पुरोहित सर का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। भले वो उनके व्यस्तता के कारण इस संगोष्ठी में शिरकत नहीं ले पाए, लेकिन उनके सहयोग के बगैर यह इतना बड़ा आयोजन करना असंभव है। उनका हमें हर तरीके से पूरा सहयोग इस आयोजन के लिए रहा है, इसीलिए मैं विभाग की ओर से और पूरे आयोजन समिति की ओर से उनका भी शुक्रिया अदा यहाँ करना चाहूंगा। इसके बाद में इस आयोजन में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, ऐसी हमारी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर चेतना बनावत मैम, जो इस सेमिनार की कन्वीनर थी, मैं उनका भी यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इस महामारी के समय में सरकार के समय समय पर स्थितियों को देखकर नियम बदल रहे हैं और इन नियमों में ये जो आयोजन है ये ऑनलाइन किया जाए या ऑफलाइन किया जाए, किस तरीके से किया जाए, लेकिन करना तो है। लेकिन इन सभी विकट परिस्थितियों में सभी पर मात करते हुए मैडम ने बहुत अच्छा एक फर्म डिसीजन लेके इतने अच्छे बड़े बड़े लोगों को यहाँ इनवाइट करके एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसी के साथ में संगोष्ठी के को सफल बनाने के लिए, सफल आयोजन के लिए अनेक लोगों का योगदान रहा है। उन सभी का नाम लेना यहाँ पे संभव नहीं है, किंतु हमारा पूरा टीचिंग स्टाफ, उसके बाद में नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी हमारे स्टूडेंट्स, टेक्निकल टीम, खास करके यूसीसी डिपार्टमेंट हमारी यूनिवर्सिटी का, उन्होंने बहुत अच्छे से ये सब निभाया है। स्वीकार जी, जिन्होंने हमारी फैकल्टी है, लेकिन उन्होंने भी ये टेक्निकल बाजू बहुत अच्छे से उन्होंने निभाई है। तो इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी मेंबर्स को का भी मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई और इस कार्यक्रम को सफलता की और वो लेके गए। प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप से जिन जिन लोगों का सहयोग
इस आयोजन में हुआ है उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। विश्व भर से हमारे साथ जुड़े संगीत के अध्यापक, शोधार्थी तथा उपस्थित सभी रसिकजनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और यह संगोष्ठी हम सभी के लिए एक अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरक रही है। मैं समझता हूँ कि ऐसे ही आयोजन में हम हर वर्ष हमारे तरफ से इस तरीके का आयोजन होता है। आप सभी इसी जोश में, इसी उल्लास में हमारे साथ हर साल जुड़े रहो। और हमारी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर चेतना बनावत जी के व्हाट विल से परवानगी से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की ये जो सत्र है और ये 2 दिवसीय संगोष्ठी जो मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा ली गई वो समाप्त हुई है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सॉरी, एक ही बात इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पर फीडबैक फॉर्म पेस्ट हो चुका है और फीडबैक फॉर्म आपको भरना ही है। मैं सभी को अनुरोध करती हूँ कि फीडबैक फॉर्म का लिंक यहाँ पे आया है, वो आपको भरना ही है और तभी सर्टिफिकेट्स इशू होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा प्रणाम और सब लोग यहाँ पे आए और इतने अच्छे से अपनी अपनी बात रखी। सभी पार्टिसिपेंट्स को और गुणीजनों को भी मेरा प्रणाम। धन्यवाद। I'll take your leave now. Namaskar. स्वीकार सर? येस मॅडम. हा, आता मी सोडलं तर मीटिंग बंद होणार का? हॅलो हॅलो. हा, म्हटलं मी लीव केलं तर मीटिंग बंद होणार का? आता एक जस्ट करा, तुम्ही होस्ट आहात बहुतेक, तर जस्ट रेकॉर्डिंग पॉज केलंय. रेकॉर्डिंग स्टॉप केलंय. मग Stop आता recording नाही तुम्ही लीव्ह करू शकता. ओके, स्टॉप रेकॉर्डिंग करायचंय? हो, स्टॉप रेकॉर्डिंग करायचंय. ठीक आहे, केलं. आता मी लीव करू शकते का? हो, करू शकता. येस, थँक्यू. ओके.